Welcome back, everyone. Welcome to Maheshwari classes. This is your teacher Kabir Singh, the English relatable teacher. Now, today we will be starting with the third poem of our ICSE Class 10 syllabus, which is When Great Trees Fall by Maya Angelou. Now, this poem is slightly on a tougher note. Why? Because it has a very deep meaning, right? लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. Each and everything will be cleared in this one short video. Come along, everyone. Let's get done with this poem. Now, Maya Angelou, she is a poet, a memoirist, author, activist, and scholar. Maya Angelou was best known for her unique and pioneering. What do you mean by pioneering? When you're doing something for the first time. Okay, autobiographical writing style, which is also evident in this particular poem. बहुत ज़्यादा autobiographical है, ठीक है? A memoirist is someone who memorizes things easily or specializes in memory techniques. Example, she's a skilled memoirist reciting entire poems from memory. Okay, this I took a very candid picture. Obviously I did not take it, लेकिन मेरे को जो मिली, I thought that it sort of represents Maya a little more, right? चलो जी, let's start with about the poem. Now in this chapter again, in this poem, like I say, ICSE में बहुत important होता है बच्चा लोग. About the poem, just focus here, ठीक है? In her poem, When Great Trees Fall, Angelou speaks of loss as a traumatic yet inevitable. You cannot, evited. I am inevitable. Thanos yaad hai na? That death has to come. The loss, the separation, it has to happen. You cannot escape from it, right? Part of the human experience. One that leaves despair, that is extreme state of sadness and misery in its wake. And this is what we are left with when we lose someone close. Angelou uses the metaphor of a tree falling in the jungle as if its effect on the fauna. And how? Because the tree was a very big tree, a banyan tree, okay, or any tree, any mango tree, neem tree, any big tree will be will have a lot of longevity. Okay, longevity. That means it could be there for 80 years, 100 years. पूरा ecosystem effect हो जाता है उसके गिरने से, ठीक है? And describe the enormity, कितना बड़ा है, of death and its impact on those struggling to cope in its aftermath. Aftermath is repercussions. What do you mean? The aftermath is the consequence, effects or results of an event. ठीक है? However, the poem moves beyond the emptiness. उससे आगे जाती है. And sense of loss to offer hope for healing. And as you will see during the last lines of the poem, throughout the poem, stages में है poem, you will see a glimmer of hope. ठीक है? In the concluding lines, they existed, we can be and be better, for they existed. This is a sort of inspiration, sort of motivation that because they existed, because they stayed with us, it's our responsibility to be our best versions and take forward their learnings. Okay, these words give new meaning and seem to bring fresh purpose to life. Angelou declares that because this great soul existed, क्योंकि ये great soul exist किया, we can be better. Readers are comforted. Throughout the poem हमको बहुत दर्द होता है, but at last we are comforted by the assurance कि हाँ ये हो जाएगा. क्या assurance दे रही है वो? That others who have felt such grievous pain, such serious pain, grievous is serious pain, ठीक है, have not only healed but been made better human beings simply from having known the great soul. They have taken the teachings of that great soul and implemented them in their real life and have become a better versions of themselves. We might never be the same again, क्योंकि बहुत पेन है, उनके जाने का गम कभी नहीं जाएगा. The pain and sorrow may never leave us. Look, right? Yet the memory and influence of the great soul,
yet the memory and the influence of the great soul will linger, वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है. They will continue to shape and affect our lives. If we have lost someone close, यार नानी होती तो कैसे करती, यार नानी होती तो ये कैसे करते, अब्बा जी कैसे करते, ये सारी चीजें, ठीक है, that kind of thing. Angelo declares that because this great one existed, क्योंकि ये exist करे, we can be better versions of ourselves. They are still motivating us to be the best versions of ourselves, to work hard and to implement their teachings in life. Now, the poem is a poignant. Now we are accustomed to this word. नया नहीं है अब हमारे लिए word. आप एक वीडियो देखते आ रहे हो ना, the last lesson. Poignant is extremely moving and thoughtful poem. The poem is a poignant and thoughtful poem. बहुत सोच समझ के लिखी गई है. That beautifully captures, क्या क्या चीजें कैप्चर करती है, the profound impact of the loss. Profound ये word आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. थ्रू आउट द पोएम एक कीवर्ड है. क्या मतलब है इस प्रोफाउंड वर्ड का? ग्रेट, बिग, ठीक है. अपने पास मीनिंग्स नोट करते रहना बच्चा लोग, ठीक है. ग्रेट एंड बिग. इंपैक्ट ऑफ द लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, वाइल साइमल्टेनियसली, साथ ही में, अफर्मिंग द रेजिलियंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. द टाइटल, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल. अच्छा हाँ, यहां पे मैं सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल डिस्कस कर रहा हूं. हर एक पोएम में मैंने स्टाइल नहीं डिस्कस किया है. इस पोएम में स्टाइल डिस्कस किया है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. The title When Great Trees Fall carries a great deal of significance, setting the tone and introducing the central metaphor of the poem. ठीक है, tone भाई और central metaphor. When great trees fall तो क्या होता है? It serves as a poignant reflection, a moving reflection of the themes of loss, grief, and eventual renewal that Maya Angelou explores in the body of the poem. In the title, टाइटल में क्या होता है भाई? इन द टाइटल एंड थ्रू आउट द पोएम, ग्रेट ट्रीज सर्व एज अ मेटाफर फॉर इन्फ्लुएंशियल फिगर्स. क्या इन्फ्लुएंशियल फिगर्स? इंडिविजुअल्स हु हैव हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन आवर लाइव्स ऑफ, ऑन द लाइव्स ऑफ अदर्स. रतन टाटा, राइट? पीएम मोदी, although obviously he's alive, but just imagine the day when he leave us. The Amitabh Bachchan, right? These great cricketers like Kapil Dev, like Sunil Gavaskar, right? These people who have impacted people's life for generations. Okay, just as great trees stands tall in the forest, providing shelter and sustenance. कि भाई मैं खड़ा हूँ, I am here to the creatures. कि if you want, I am here. I am inviting you all, come live at me, come live on me. ठीक है? To the creatures around it. These individuals provide guidance, and because they are wise, they have a very important they are an influential figure, so they provide guidance, they provide support and inspiration in their communities. Okay? Now, moving forward, the fall of these great trees signifies their passing or death. ठीक है, यही इसी के ऊपर पूरी पोएम है कि मेटाफर है. As the great trees fall, it's a metaphor for influential people losing our lives, and the terrible shock कि भाई अब क्या होगा. The sense of numbness कि भाई इनके बिना जीवन कैसे चलेगा. I really can't understand this. Much like the falling of a great tree causes a disruption. Disruption is disturbance. ठीक है, in the forest ecosystem. ये भी वर्ड हम लोग पढ़ के आ रहे हैं. भीष्म लोचन शर्मा, forest ecosystem. The death of influential figures जो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं leads to profound, again profound बार बार आएगा, great grief and disorientation. Disorientation भी मैंने पढ़ाया है. क्या मतलब है? confusion. बच्चा लोग, ये सारे कुछ वर्ड्स बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, अपने कॉम्पोजिशंस में भी यूज करना. Among those who looked up to them, this metaphor powerfully captures the ripple effect. एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद ripple effect. You have seen the water when you throw stone into water and ripples are formed. That's the ripple effect.
okay, of such a loss. However, the title also implies again is hidden comparison, hidden thing, that there is a process that occurs when these great trees fall, a sequence of events, that is एक sequence में चलते हैं events and reactions that follow such a loss. As the poem unfolds, धीरे धीरे as we start reading it, as it goes forward, it explores this process, delving मतलब deal करना into the experiences of mourning. ठीक है, recollection, how person is mourning. What do you mean by mourning? Whenever you are dealing with the loss of someone, recollection, your memories with that person, and eventually finding peace. And after a period of time, you find peace. Okay, now she's gone, he's gone. I have to live life without her, without him. I have to move on. And renewed sense of purpose. And why do I have to move on? Because I want to make them proud. The poem is written in free verse. This is the style of the poem. Okay, focus यहाँ पे. The style of the poem is written in free verse. Stanza बहुत ज़्यादा नहीं है, which allows natural expression. ठीक है, the emotive language, emotive is use of emotions बहुत अच्छे से किया है, helps in expressing grief and loss. भाई at the end of the day poem पूरा का पूरा theme है grief यानी sorrow, है ना, and loss which he has experienced. ठीक है, the repetition of phrases like when great trees fall and when great souls die, underline का मतलब ये नहीं underline कर दिया सर ने, highlight, signify the profound impact. बार बार ये वर्ड आएगा, बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और उसके लिए एप्ट वर्ड ये यूज किया गया है. ठीक है, ऐसा नहीं सर को और वर्ड नहीं आते हैं, बिग है ना, इम्पैक्टफुल, लेकिन कितना ज्यादा, that's why profound is used. Of the loss of significant figures, the tone also remains conversational. जैसे मैं और आप इस समय बात कर रहे हो, ऐसे ही पूरी पोएम की टोन है, as if कि ऑथर हमसे बात कर रही है और फिर पता है ये हुआ, ये होना चाहिए था, ये मैं इस समय फील कर रही हूँ, मुझे तो ये लगता है, that kind of a tone which helps us to connect deeply with the deep themes of the poem, because the tone is conversational. हमारी हेल्प पे जाती है कि हम पोएम के अंदर पूरी तरीके से इमर्स हो जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं, and the poem we are able to feel the poem more in a better way. Now the poem also reflects, पोएम और क्या दिखाती है, reflects the autobiographical style of the poet, as this poem was written after Angelo lost her fellow writer. मैंने बताया था ना autobiographical है, क्यों? Because she had written this poem after she lost her fellow writer and activist James Baldwin. The poem in sort of in three parts. Three parts में है. एक्सेप्टिंग द लॉस, पहला है एक्सेप्टिंग द लॉस, भाई लॉस हुआ है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो. फर्स्टली तो यू गेट नम, यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड, भाई ये हुआ क्या मेरे साथ, हाउ कैन गॉड डू दिस टू मी, दैट काइंड ऑफ फीलिंग you are dealing with initially, and then experiences the tragic and deep pain, extreme pain, ki why did it happen, and everything is going inside you, you are feeling absolutely numb, रोज दर्द होता है, रोज you kind of remember them and you are feeling why God, that kind of pain, sorrow which you are experiencing. ठीक है, and then finally healing and renewal which we feel at the last. So abhi we are going to start with the text of the poem. ठीक है जी, text of the poem. When great trees fall, rocks on distant hills shudder, lions hunker down in tall grasses, and even elephants slumber after safety. Everyone who are feeling कि sir notes कैसे मिलेंगे, you don't have to worry about it. Kabir sir will take care of it. You can find all these notes. No charges will be taken. Everything is free on Maheshwari app. Free material, free study material पे जाओ, you will find each and everything. Do not worry. Okay. When great trees fall, rocks on distant hills shudder. These lines, the poem opens with a metaphor, the falling of great trees. This symbolizes the passing
passing away of a significant individual, important individual. The shuddering rocks क्या represent करते हैं? Shuddering rocks क्या represent कर रहे बच्चा? Shuddering rocks represent the profound effect this loss has on the world. कि कितना जबरदस्त इफेक्ट है पूरे वर्ल्ड पे इस लॉस का, राइट? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, these lines continue the metaphor showcasing the ripple effect of loss in nature. Nature में इस loss का क्या ripple effect है? Lions hunker down in tall grasses and even elephants lumber after safety. ठीक है? Hunker down का meaning क्या होता है लिख लो. To squat close to the ground, okay? Sort of cover down के आसपास ही है, or to stay in a place for a while. In this case, it refers to animals trying to make themselves small or hide in response to the danger. That because this great tree has fall, let me just go and hide somewhere. Let me just hide me somewhere. And we are talking about lion, who is the king of the jungle. He is thinking about hiding. Lumber, to move in a slow, heavy and awkward way. It's very difficult to move, sort of that. Describe the elephant's movement as they seek safety. वो जा रहे हैं, safety ढूंढ रहे हैं, ठीक है? Shudder, to tremble or to shake, usually from fear or cold. In this context, response to a significant event. इसलिए इतना जबरदस्त इवेंट हुआ है, tree has fallen, someone so important in your family, someone so important whom you know has died, and you are shuddering literally. अब क्या होगा, right? Now this poem is not that simple, multiple explanations हैं, ठीक है? डू नॉट वरी, एक एक चीज आपको महेश्वरी आप पे मिल जाएगी. अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो यहाँ पे, जब आप वीडियो देख रहे हो, तो आई वुड रिकमेंड एक पेंसिल और एक कॉपी साथ में रखो एंड स्टार्ट नोटिंग दीज थिंग्स डाउन. अपनी हैंड राइटिंग में लिखा होगा तो प्री बोर्ड्स में लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है? फर्स्ट स्टैंजा मेटाफोरिकली शोज द पासिंग अवे ऑफ the great person and deep impact of the loss as normalcy is disrupted completely. नॉर्मल चीजों से हट गए ना हम लोग, अब तो नॉर्मल रही नहीं. नॉर्मली होती, अगर दादी होती यहाँ पे तो कितना ये करती, दादी तो है नहीं ना. तो विदाउट दादी हाउ इज लाइफ नॉर्मल? इट्स नॉट नॉर्मल. विदाउट नानी हाउ इज लाइफ नॉर्मल? Without an influential figure, for example a political person, or for example a person who looks after everyone, उस पर्सन के बिना लाइफ नॉर्मल कहां रही? वो तो नॉर्मलसी तो चली गई ना हमारी लाइफ से. दैट इज व्हाट ही इज रेफरिंग टू, ठीक है? एलिफेंट्स अगेन सजेस्ट स्ट्रेंथ एंड पावर, लेकिन वैसा चीजें चल नहीं रही हैं. ग्रेट शोज स्ट्रेंथ. यहां पे जो ग्रेट वर्ड यूज किया है, ये क्या शो करता है? शो स्ट्रेंथ, स्टैचर. किसी का स्टैचर बहुत अच्छा है. स्टैचर वर्ड याद करो, लास्ट लेसन में मैंने पढ़ाया था आखिरी में, है ना? द स्टैचर ऑफ Monsieur Hamel changes or increases in किसकी आइज में? फ्रांसिस की आइज में. and also symbolizes wisdom and longevity. क्या symbolize कर रहा है? wisdom symbolize कर रहा है और longevity कि कितने टाइम से है वहां पे कोई चीज, ठीक है? rocks which are something very stable. rocks की बात कर रहे हैं. rocks हिलती नहीं है, पत्थर है ना, हिलते नहीं है, क्रैक्स आ गए हैं उसमें. वेरी स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग आर ट्रेम्बलिंग. क्रैक्स ऑल्सो कम्स ऑन दीज रॉक्स. क्रैक्स आ गए हैं, ट्रेम्बल कर रहे हैं, जो शेक हैं कि भाई पत्थर रख दिया, चट्टान रख दी, चट्टान थोड़ी ना हिलती है, एंड चट्टान भी हिल गई है. दिस इज द इंपैक्ट ऑफ द लॉस. लायंस हु आर द किंग ऑफ जंगल एंड द मोस्ट फियर्स एनिमल. सबको उनसे डर लगता है भाई, शेर से डर लगता है सबसे ज्यादा. Who symbolizes courage, and उसका symbolization क्या है? Courage. Lions means pride, courage, right? He's a lion. शेर है बच्चा, शेर बच्चा है हमारा. Are looking for a place to hide, and even lions are looking for a place to hide, and this shows that they are scared. सब डरे हुए हैं, डर का माहौल है. The other interpretation is that they are crouching to salute the dead. Now this is also one of the interpretations which I had in my mind, is कि the other interpretation, like I said, 2 + 2 is never 4, it can be 5, it can be 3. जो मेरे अकॉर्डिंग था is that they are crouching, नीचे ऐसे crouch कर रहे हैं, ठीक है? To salute,
just to salute that, okay, you have lived up, you are bowing down that I respect the life which you have lived. Just in out of respect we are bowing down. जैसे toast करते हैं वैसे a sort of tribute to the tree, that because of you so much of fauna and the life was possible, life developed, so it's a sort of respect also from us. So ये भी हो सकता है एक other interpretation. The dead, the great person who is sadly no more. Okay, when great trees fall, rocks on distant hills shudder, lions hunker down in tall grasses, and even elephants lumber after safety. ठीक है, the elephants walk slowly, एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं. This signify the weight of the loss. कितना जबरदस्त loss है, ठीक है, that you get a little numb, ठीक है, and this line makes you feel when you lose a close person. ठीक है, जब आपका कोई खास पर्सन आपने खो दिया है, just imagine your friend, maybe I really hope it's not your friend, okay, a person whom unfortunately you have lost. The loss occupies you so much, इतना ज्यादा आपको कंज्यूम कर लेता है, पूरी तरीके से आपको ओवरवेलम कर लेता है. You are so overwhelmed that you are unable to move. Sort of आप शॉक हो ना, you are not able to move, you are still at a place. Every step you take, धीरे धीरे आप मूव करने की कोशिश कर रहे हो, वो एक एक स्टेप भारी लग रहा है. इट्स वेरी हार्ड, इट्स टेकिंग अ टोल ऑन योर बॉडी. जो इतना बड़ा स्टेप है, ठीक है, इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक एंड यू आर नॉट इन कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर सेल्फ. और अपने ऊपर से कंट्रोल धीरे धीरे जा रहा है. दिस इज द शॉक. यहां से पोएम ओपन हो रही है. द शॉक यू हैव रिसीव्ड. All of this suggests the profound, एक दूसरा वर्ड जो हम लोग ढूंढ रहे थे तो ये मिल गया, monumental effect of loss. The poet has deliberately, मैंने बार बार बताया इस वर्ड का मीनिंग, willingly, ठीक है जी, willingly used the two of the strongest animals of the forest to show कि कितना जबरदस्त इफेक्ट था when great trees fall, when influential people dies. पूरी कंट्री इफेक्ट होती है, पूरा रीजन इफेक्ट होता है, एक उनकी निजी फैमिली नहीं, सब लोग इफेक्ट होते हैं. ठीक है, निजी इज बेसिकली द पर्सनल फैमिली. दे वॉक टूवर्ड्स अ सेफ प्लेस एंड सेफ जोन. दे फील देयर प्रोटेक्शन हैज बीन स्नैच्ड अवे. उनसे कोई मेरा प्रोटेक्शन लेके चला गया है ना. माय शील्ड हैज बीन टेकन अवे. आई एम नेकेड सॉर्ट ऑफ, ठीक है, अवे फ्रॉम देम. दिस सिग्निफाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉस, कि कितना बड़ा लॉस है. And also the greatness of the person, ki how great a person he was, that if he has gone, the whole family, whole people are affected so deeply. They feel that we are in a very vulnerable place, that he is gone now. ठीक है? The falling of a great tree brings up great disruption, great disturbance throughout the forest. The ecosystem is shattered. ठीक है, the effect of the loss is seen over a larger distance. ये जो लाइन है, in a tall grass and even elephants lumber after safety. ठीक है, distant hills, larger distance. The reaction of all these relatively strong things show fear and shock. ये सारी जो relatively strong है, ये सारी चीजें क्या शो कर रही हैं? Fear शो कर रही हैं कि डर चुके हैं वो लोग. They are in extreme shock. ठीक है, okay, and the shock due to the fear. Now moving on to the next set of lines. When great trees fall in forests, small things recoil into silence, their senses eroded beyond fear. क्या हो रहा है? The falling of great tree in the forest causes the smaller creatures, जो छोटे छोटे creatures होते हैं, to retreat. Retreat is go back. ये वर्ड आपको पता होगा ज्योग्राफी से. रिट्रीटिंग मानसून्स, नॉर्थ ईस्ट मानसून्स गोइंग बैक इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर. याद आया कुछ, है ना? रिट्रीट इनटू साइलेंस, रिप्रेजेंटिंग द साइलेंस एंड शॉक दैट पीपल ऑफन एक्सपीरियंस इन द फेस ऑफ ग्रेट लॉस, जो सबको एक्सपीरियंस करना पड़ता है. रिकॉइल का मतलब क्या है? रिकॉइल का मतलब बच्चा है रिकॉइल टू सडनली स्प्रिंग और फ्लिंच, बैक इन फियर, हॉरर और डिस्गस्ट. यहां पे ये मतलब है रिकॉइल का. ठीक है,
इरोडेड का मतलब क्या हुआ, ग्रेजुअली, स्लोली वियर अवे और डिटोरेट. यहां पे लेकिन उसका मतलब अलग है. इट मीन्स मेटाफोरिकली टू डिस्क्राइब स्मॉल क्रिएचर्स सेंसेस बीइंग ओवरवेल्म्ड और डिमिनिश्ड बियॉन्ड फियर. कि उनका जो सेंस है वो इतना ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गया, वो कुछ फील नहीं कर पा रहे हैं, वो फियर तक भी नहीं फील कर पा रहे हैं. दे हैव सॉर्ट ऑफ बिकम नम, कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. राइट तुम हो यहां पे, हाँ, दैट काइंड ऑफ रिएक्शंस दे आर गिविंग, कि which suggests that they do not belong here. They are in a world of their own. They are extremely shocked. The small things refer to the poor people, people of less importance, whose lives are affected due to the loss of great men. You know, one of my grandfathers, right, when he passed away, there was a huge crowd of people, around 25 people who were disabled people, very poor people, who had come there to, you know, pay him tribute at the funeral ground. The disabled people who had come to pay him the tribute. And that's when people realized, the people amongst the family, that how many souls was he affecting, either monetarily, either with his advice, socially, how much he was affecting others, how much he was influencing others. सब पे उनका कितना अभाव था, ठीक है, पूरा. एंड उनकी एम्पैथी, जो एम्पैथी वो सबको शो कर रहे थे, उसका रिजल्ट था कि एवरीवन वाज देयर एंड एवरीवन वाज शैटर्ड एंड शॉक्ड कि अब हमारा क्या होगा. द पर्सन हु यूज्ड टू हेल्प अस हैज गॉन. गॉड who will take care of us now. That kind of helplessness was reflected there, and वो यहाँ पे भी reflect हो रही है. When great people die away and pass away, each and everything you feel helpless कि अब क्या होगा. You are not able to comprehend things. You are not able to comprehend the next moment. The small things refer to the poor people, people of less importance, whose lives are affected due to the loss of great men. The other interpretation can also mean the small children. For example, the small children, the babies who are very close, the toddlers, 5 years old, 6 years old, or even 10-year-olds, who are very close to their parents, to the grandparents, right? If they have to go through the loss of a grandparent whom they were very close with, right? They would be shattered. The loss would consume them, and it would be very hard for them to deal with it. क्यों? क्योंकि they are not that mature. हम लोग और चीजें हैं. The life will become busy. The grandparents were an integral part of their life, and they have been swept away by the harsh nature of life. But they will feel a lot more, क्योंकि वो अभी इमोशनल सेंस मेच्योरिटी ग्रो नहीं की है उनकी, तो उन पे इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा. एंड हाई चांसेस है कि उनकी लाइफ एक बड़ा सेटबैक ले पीछे चली जाए. एंड दैट्स व्हाट इट इज बीइंग रेफर्ड हियर, रिकॉइल इनटू साइलेंस. दे माइट कम अंडर डिप्रेशन. दैट आल्सो हैज बीन एक्सप्रेस्ड हियर. Small things of people of low magnitude go back. They were happy because of these great people were surrounded. वो उनके sort of support system थे, but that support system has gone. So the happiness from their life is gone. The loss has retreated them. वापस चले जाओ तुम. Retreat का मतलब वापस जाना, back. ठीक है? Them, ठीक है? And what have they become? They have become frozen, numb, paralyzed. Again, I have given you 3 synonyms. यूज करो. दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड. दे आर कंप्लीटली शॉक्ड. पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुके हैं. दैट इज दे आर अनेबल टू एक्सपीरियंस द एबिलिटी टू फील. कि फील कर ही नहीं रहे हैं वो कुछ. खाना खा रहे हो तो खा लिया, बस बोला तो खा लिया. यू आर नॉट एबल टू फील, यू आर नॉट एबल टू सी. Obviously you are seeing, but you are emotionally you are not caring about anything. कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ. As they are consumed by the shock of grief. No tears, nothing, no reaction. The falling of great tree in the forest
causes the smaller creatures to retreat into their silence, representing the silence and shock that people often experience in the face of great loss. Again, when great souls die, now this is repeated, अभी 2 बार repeat हुआ, this when great trees fall, ठीक है, first 2 stanzas में. अब आगे ये लाइन repeat होगी, देखना. When great souls die, the air around us. Now सीधा फोकस souls पे चली गई वो. The air around us becomes light, rare, sterile. अगर एग्जामिनर का मन हुआ बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन पूछने का, तो what, how does the air around us become? तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, है ना. वैसे ऐसा क्वेश्चन कम आता है, लेकिन एमसीक्यू में अगर आ जाए तो उस हिसाब से इस पोएम को अच्छे से प्रिपेयर करना. The poet shifts from the metaphor to directly speaking about death of great souls. ठीक है, significant individuals, the altered quality, altered is changed. Altered का क्या मतलब हुआ बच्चा? Changed. Quality of air symbolizes the stark. Stark is stark evident change. Stark evident change मतलब क्या हुआ? जो जबरदस्त evident है, ठीक है, दिख रहा है. Change people feel in their environment after such a loss. Sterile is lacking in life or warmth, virality. These lines convey a void, एक खाली जगह. Void is empty space जो डेवलप हो जाती है, क्योंकि ये स्पेस उस पर्टिकुलर पर्सन की थी. मैं ये स्पेस कोई नहीं ले सकता मेरी लाइफ में. For example, I have lost my nani. Nobody in my life can take that particular thing. A person who calls me Biba Bachcha, है ना, who gets happy when I show her and my achievement, who shows affection to me. Nobody can take that void, right? Our eyes briefly see with a hurtful clarity. Our memory suddenly sharpened examines. ठीक है, एक बार इसको दोबारा समझ लो. द पोएट शिफ्ट्स फ्रॉम द मेटाफर टू डायरेक्टली स्पीकिंग अबाउट डेथ ऑफ ग्रेट सोल्स. उनकी डेथ के बारे में. सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल्स, इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स. द ऑल्टर्ड क्वालिटी ऑफ एयर सिंबलाइजेस द स्टार्क एविडेंट चेंज पीपल फील इन देयर एनवायरमेंट, है ना. अब देखो क्वालिटी ऑफ एयर ये वापस ट्री से भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एक अगर बहुत पुराना ट्री होगा तो इट विल ऑल्सो यू नो हैव अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन. It will emit, it used to emit a lot of oxygen also, that has also died. तो वो भी deteriorate हो चुका है पूरी तरीके से, ठीक है जी. Change people feel in their environment after such a loss. Our eyes briefly see with a hurtful clarity. Our memory suddenly sharpened examines. This speaks to the acute यानी absolute clarity that often accompanies. कब आती है? ग्रीफ के साथ आती है. जब आप when you are extremely sad, extremely gloomy, तब ये आती है. क्या होता है? When memories become sharper each and every time, each and every moment which you have spent with that person, that flashes through your mind कि अच्छा मैं ये कर देता, मैं ये कर लेता, यार मुझे तो उनके साथ यहां जाना था. She always said that she used to love having tea with me. I should have taken her more to this particular restaurant which she liked. I should have taken her to the Gurdwara. I should have taken her here. That's what you are constantly feeling once you are going through that grief. ठीक है? When memories become sharper and certain realities become more apparent. Apparent मतलब एकदम सामने आ जाती हैं, दिखने लगती हैं. Our memory is shocked. हमारी जो पूरी मेमोरी है वो शॉक हो जाती है. And recalled the memory. और वो क्या करती है? More vividly. Vividly is physical description, मैंने बताया था, बहुत detailed description. This clarity makes you hurt more. और आपको और दुख होता है, आपको और hurt feel होता है. क्यों? Because each and everything is coming in front of you. Whatever the discussions, whatever resentment you had for that person, everything is vanished. तुरंत चला गया. क्या रहा? कि इंटरेक्शन कैसा था, लास्ट मोमेंट पे आई वॉज नॉट एबल टू डू अ पर्टिकुलर थिंग फॉर हर, एंड दैट स्टेज विद यू, एंड दैट ग्रीफ दैट वुड स्टे विद यू द होल लाइफ, राइट. दिस क्लियरिटी you hurt more as they come ever so clearer to you
with regret piercing you. ऐसा लगता है regret मेरे को खंजर की तरह अंदर जा रहा है मेरे अंदर. That's the feeling of regret, which you know, it's penetrating me. It's causing me extreme acute pain because it's consuming me. ठीक है, we are able to finally see with our eyes the loss and the fact that the person is gone forever. थोड़ा टाइम होता है, like I said, पोएम में 3 phases हैं. First is accepting, अभी तो accept ही नहीं किया था. Now that you have accepted the loss, you are feeling the acute grief. आपके पास पूरा आप तरीके से grief feel कर पा रहे हो. हर एक अलग स्टैंजा से अगर क्वेश्चन आए तो यहां से इस स्टैंजा से पर्टिकुलर ये लाइन से शुरू हो जाता है. You are feeling the loss now. The first two is the utter shock. You are not able to believe that my person who was sitting there yesterday, he has gone. You are not able to feel that thing. But अब क्या हो रहा है? अब you have felt that okay, you have accepted that he's gone. But the grief has hit you hard. It's almost like a truck hitting you. So much pain, but the grief, pain of grief. It becomes very evident. बहुत ज़्यादा evident है, सबको दिख रहा है. And that is why this clarity, ये जो clarity है, ठीक है, that we get is very painful. ये जो clarity, normally clarity is a good thing which you get, right? Normally clarity अगर आपके पास है तो this is a good thing, ठीक है, but ऐसा नहीं हो रहा. The finality of the realization hits you pretty hard. The person who was alive, जो जिंदा था, now only lives in your memories. केवल आपकी memories के अंदर रहता है वो. These are very impactful lines. This is a very heavy poem. मैं धीरे चल रहा हूं जानबूझ के, ठीक है. 1.5f पे ना जाना, अभी एक बार धीरे सुनो फिर जाना, ठीक है. चलो आगे चलते हैं. Gnaws on kind words unsaid, promised works never taken. Again, all this sort of represents, मतलब इसको तो मतलब regret, ये सारी लाइन ये represent करिए ये word. Here Angelo alludes to the regrets that can surface after a loved one's passing. कि यार नानी ये कहती थी कि यहाँ जाना है, उनके साथ में वहां नहीं गया यार, ठीक है, रह गया ना. Kind words that were never spoken, promises that were never kept. All this suggests the great magnitude. Magnitude is again something powerful, right? Number of loss which is overwhelming in nature. आपको consume कर रहा है. I wish I would have done this to the person. Done to the person, with the person, ठीक है, with the person that कि जो उसका मन था वो कर लेता. If I was having a sort of fight with that particular person, मैं उससे fight नहीं करता. I should have bid him adieu properly bye कह पाता उसको, एकदम से चले गए, right? You have so much of things consuming you. Nausea is again to cause constant distress or anxiety. ये literal meaning होता है, ठीक है. nausea का meaning वो भी होता है the another way. I'll just tell you, क्योंकि to bite something है ना, nausea. But यहाँ पे जो it suggests and points out the deep pain of missed opportunities. कि यार ये कर सकते थे, मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता था, मैं उन्हें गुरुद्वारे लेके जा सकता था. I should have, she liked watching this particular Amitabh Bachchan movie. I should have sat there and watched it together and we would have laughed, है ना, कितना मजा आती. And that's what you are referring to. That's what is constantly कि ये भी कर सकता था. And this pain of mixed opportunity, that's what gnawing you. That's what this regret is hitting you from inside. Great souls die, and our reality bound to them takes leave of us. Our souls, dependent upon their nurture, now shrink, wizened. अब ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है. जरा इसकी तो स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हो तो बिल्कुल ले लो, ठीक है. मीनिंग्स पहले डिस्कस कर लेते हैं. रियलिटी, द स्टेट ऑफ थिंग्स एज दे एक्चुअली एग्जिस्ट नॉर्मली. Here it refers to the perception कि हमारी क्या माइंडसेट है, हमारा
हमको कैसे काम करना था, ऑफ द वर्ल्ड विच इज शेप्ड बाय द पीपल हु इन्फ्लुएंस अस, कि जो परसेप्शन कैसे वर्ल्ड हमें कैसे देखता है, ठीक है, द स्टेट ऑफ थिंग्स एज दे एक्चुअली एग्जिस्ट, हियर इट रेफर्स टू द परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड, ग्रेट सोल्स डाई एंड आर रियलिटी, जो हमारी रियलिटी है, ठीक है, विच इज शेप्ड बाय द पीपल हु इन्फ्लुएंस अस। अब उनके साथ क्या होगा, हमारी रियलिटी के साथ क्या होगा, बिकॉज द पीपल हु वर इन्फ्लुएंसिंग अस आर नॉट देयर एनीमोर। अब हमें इन्फ्लुएंस कौन करेगा, अगेन द सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, take leaves of us, to go away or depart. In this context it is used metaphorically to describe the loss of reality and normalcy after a significant person's death, कि मेरे लिए तो कभी नॉर्मल रहेगा ही नहीं ना, because that influential person, for example your teacher whom you loved, whom you adored, who guided you through and through, your grandmother whom guided you कि बेटा ऐसे करना चाहिए, बाबा जी ऐसे करवाते हैं, you should go this, you should do this, that guiding light, that sort of best part about that person, she is not more there anymore, you are feeling helpless, you are feeling vulnerable कि अब मैं कहां जाऊं, मेरे पास कहीं जाने के लिए नहीं है, there is nowhere to go now, whom should I have now, whom should I go to now, you are feeling sort of helpless, ठीक है, बाउंड, टाइड और लिंक्ड क्लोजली, हियर इट रेफर्स टू आवर डीप कनेक्शंस, जो हमारा कनेक्शन बहुत डीप है उस पर्सन के साथ, ठीक है, विद इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स, उन्होंने आपकी लाइफ को शेप करने में, आपके आइडियाज को फॉर्म होने में इफेक्ट किया है, तभी तुम्हारे लिए नॉर्मल नहीं है, घर जाऊं तो जाऊं कैसे, उनके बिना तो घर नॉर्मल ही नहीं है ना, दैट्स व्हाट यू आर फीलिंग, dependent, needing someone or something else for support, ये ठीक है, in this stanza it refers to our reliance on the guidance and influence of significant individuals in our life. Now whom should I ask कि नानी ये वाला कलर अच्छा लगेगा, नानी कड़ा प्रसाद बना रहा हूं, इसमें चीनी कैसे डालूं, you know I am thinking that I will not be able to do this, who will say from there कि बच्चा तुम कर लोगे, I know you can, who will give that affirmation, nobody will give that affirmation. That's what this poem reflects, such a deep and heavy poem this is, nurture, to care for and encourage the growth or development of. In this poem it's used to represent the emotional and intellectual support provided by the great souls, कि उन्होंने कितना ज्यादा हमें इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट दे रहे हैं, जस्ट how much they are supporting us, how much they are shaping our life, how much they are, अच्छा ये दिक्कत हो रही है, इसको ऐसे ऐसे कर लो, ये दिक्कत हो रही है, every time you are dependent on them, ये सारी चीजें आपस में इतनी जबरदस्त तरीके से कनेक्टेड है बच्चा लोग, very very important lines these are, बहुत important lines हैं पोएम की ये, ठीक है, when a person we deeply admired, जिसको हम बहुत एडमायर करते थे और loved, passes away, our reality changes, हमारी लाइफ उथल पुथल हो जाती है पूरी तरीके से, रियलिटी रियल नहीं रहती है, सब चेंज हो जाता है, leaving us feeling smaller and less nourished, और हमें फीलिंग आती है कि now we are not that confident, and who will nurture us, who will develop us now, nobody. Wizened is shrunken and wrinkled, it's sort of used when you for flowers mostly, from age and or illness. In this context it describes the shriveling of souls after a great loss, that is we are absolutely shriveling, we are absolutely wilted away and we are not able to comprehend कि करूं क्या आपके जाने के बाद, कैसे जीते हैं, ये तो सीखा ही नहीं ना, ये तो नहीं सिखाया आपने, what shall I do now. Great souls die and our reality bound to them takes leave of us. Our souls dependent upon their nurture now shrink, wizened. The death of the great soul disturbs our reality, पूरी तरीके से हमें डिस्टर्ब कर देती है. Bound suggest, कुछ कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं, कुछ कुछ चीजें एड ऑन हैं, ध्यान से सुनना. Suggest a great impact and closeness of the people. ठीक है, कितने क्लोज थे हम उस पर्सन से. It can also reflect the dependence, intellectual and emotional support of the persons on the great soul. They sort of helped you to look through the world, look
a world through a particular lens and you are still grateful क्योंकि वो चीजें तुम्हारे पास हैं. अब तुम उस लेंस से देख ही नहीं सकते कि यार मम्मी यहाँ होती तो कैसे करती, नानी यहाँ होती तो कैसे करती. You are still thinking about that. Leave of us, it also suggests some part of our life associated with their life is vanished. है ना, होता है कि आप किसी पर्टिकुलर जगह पे जाते हो, है ना. फॉर एग्जाम्पल, if I am going to my maternal uncle's house, my mama's house, it's not my mama's house, it's nani home. नानी के घर जा रहे हो आप. Although nani isn't there, the feelings are still there about her, right? And a part of you which was a little childish, which wanted that kind of love, right? That has died away, that has gone. उनके साथ वो भी चला गया. You making childish errors, जानबूझ के थोड़ा सा परेशान करना, टीज करना, you were doing there just to get some love, get some molly cuddling, right? वो नहीं हो रहा. That part of you has gone with them. Shrink shows the deflation, that deflation कि आपके अंदर से कुछ चला गया and you are now absolutely shrink. You are absolutely at your low. The happiness and pride fall into a pit. कि ये देखो, right? Right? मेरा दादा है यार, मेरी बड़ी मम्मी है ये. My great grandmother she is. Right? Your pride, your happiness that falls into a pit. Pit is गड्ढे में गिर गए तो आप. Right? Each and everything. You are still falling. Right? Now, when a person we deeply admired or loved passes away, our reality changes, leaving us with a feeling smaller and less nourished. You were helped and evolved by these great people in your life who solved your life as well as mental problems. सब चीजें में आपको help करते रहिए. Their emotional presence was very valuable. You were able to survive. You were ranting your stuff. अपने अंदर से खराब चीजें निकाल के उनको बताते थे, and they used to listen. Just stand there or sit there and just listen to you and be happy. That listener has gone. That important person has been taken away and was very valuable. Therefore, as they are gone, a big emotional void is created. A big emotional void is created. क्या हो गया? Big emotional void has been created. Our minds formed and informed by their radiance fall away. We are not so much maddened as reduced to the unutterable ignorance of dark, cold waves. Heavy line है, समझो क्या है? Radiance, light or heat as emitted, ठीक है? Reflected by something. This is the mean. Metaphorically यहाँ पे radiance क्या mean कर रहा है? Describing the positive influence of great souls on us. Whatever good qualities we have, वो उन souls की वजह से है. The punctuality a person has, for example, the habit of reading, for example, if a person has developed, क्योंकि वो read करती थी. If you are spiritually connected with God, क्योंकि आपकी नानी करती थी तो आप भी वो चीज आपने ले लिया and that things is very close to you. So all the good things which you have got, that person has influenced you for that good things, right? वही चीज दिखा रहे हैं. Maddened, drive to madness, very annoyed or angry. यहाँ पे it used to convey the state of dismay, confusion that one feels after a loss. आप गुस्सा नहीं हो लेकिन आप कंफ्यूज हो. करूं तो करूं क्या? जाऊं किसके पास में? Whom should I ask for guidance now? You are not there. You didn't tell me to whom should I go after you? I do not know how life is without you. I really don't know. And this is really hurting me because I don't know what to do now. Unutterable ignorance, the words cannot describe the massive loss. कि loss मेरा इतना ज्यादा है कि मैं बता नहीं सकता. My words will fail me. The effect you have had on me, it would be an insult. The words cannot come and I cannot describe it in my words. The dark cold caves also symbolize, यहाँ पे symbolism use किया है, ignorance and despair felt after, you feel ignored because that person is not there, and the sense of loss, despair, grief felt after the loss of the guiding souls. अब वो guiding souls तो है नहीं ना, ये important word है बच्चा,
ये लोग आप लोग यूज करोगे, गाइडिंग सोल्स है ना आपके. द डिपार्टेड्स इन्फ्लुएंस ऑन आवर लाइफ फेड्स, leaving us in a state of profound ignorance and confusion. Because we are ignored, we do not know what to do. Similar to being lost in a dark, cold cave. एकदम dark, cold, ठंडी गुफा में जैसे आप you don't know where to go find light from. You do not know where you are going to, when are you going to step out from it. You are confused, you are feeling ignored. You are the same feeling. Now, and when great souls die, again this is repeated throughout the poem. Okay, okay, this whole die thing. Okay, after period peace blooms slowly and always irregularly. Always irregularly important है. Spaces fill with a kind of soothing electric vibration. अब अगर वो now comes the fifth part, the renewal. ठीक है, ध्यान देना. irregularly, in a non regular manner. Irregularly मतलब non regular manner, not according to the usual standards. Standards के according नहीं है. It describes the unpredictable non-linear process of healing. ऐसा नहीं है कि you will just get over it. आज 1 महीना, फिर अभी 10 दिन है, 10 दिन हुए और कम हो गए, उनकी याद आना और कम हो गई, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, एंड 1 साल बाद याद नहीं आ रही. ऐसा नहीं होता है. दिस इज नॉट लीनियर, दिस इज नॉट अ ग्राफ दैट विल गो ऐसे या ऐसे. नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है. सम डे यू माइट फील दैट ओके फाइनली आई एम गुड इनफ, ओके आई एम मूविंग ऑन, and someday some memory will just pop into your head and you will be consumed about that person. You will get overwhelmed and you will shatter once again. And this is what healing is after a person goes away, and it's very hard to deal with it. Vibration, and I really hope bacha there's a reason why all these poems are included in your text. The last part here, it, you know, this is the part where whenever you feel a situation like this in your life, just go back to these lines. Go back here and you might find fortitude, hope somewhere in these lines, in these particular lines, because at the end of the day it is the hope which matters. Okay, vibration, a rapid back and forth movement. ठीक है, ये फिजिक्स वाला है. मेटाफोरिकली यहाँ पे क्या डिस्क्राइब कर रहा है? A soothing, comforting presence that fills the space left by the departed. ठीक है, आफ्टर अ पीरियड कि वो जो सूदिंग स्पेस थी, कंफर्टिंग प्रेजेंस था, वो fills the space left by the departed. After a period, it suggests the time frame which is required for healing from such a great loss. After a period, बहुत समय लगता है ना? ऐसा नहीं कि 2 दिन में हाँ चलो जी अपने काम पे. Yes, you can go to your work and you have to go to your work after a period of time, but that does not mean that you are over the loss. Loss को subside करने में बहुत टाइम लगता है. It takes a huge period of time. Shimmer of hope has been shown by this stanza. ये पूरे स्टैंजा में एक होप है, आपको एक होप मिल रहा है. ठीक है, पीस अगेन सजेस्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉस. अगेन, नाउ आई हैव एक्सेप्टेड द लॉस, नाउ आई एम फाइनली मूविंग ऑन इन लाइफ. आई एम फाइनली, you know, settling with the fact, right? The constant ebbs and flows of healing, as some days you would be better and see the growth, whereas some days the memory of the special person will consume in grief. Consume you in grief होगा बच्चा, consume you in grief. The process of healing is full of ups and downs. ऐसा single process नहीं है. जैसे मैंने बोला, ऐसी लाइन जाती है कभी ऊपर कभी नीचे, साइन कॉस ट्रफ बनता है. ठीक है, डिस्पाइट द ग्रीफ एंजेलो सजेस्ट दैट विद टाइम पीस रिटर्न्स, फिलिंग द वॉइड लेफ्ट बाय द डिपार्टेड. जो एक बड़ा सा इमोशनल मैंने वर्ड बनाया था इससे पहले, राइट? इससे पहले देखो मैंने आई हैड मेड दिस इमोशनल वर्ड, राइट? दैट सॉर्ट ऑफ स्टार्ट्स
it starts begin to heal, है ना, वो हील होना शुरू हो जाता है. ठीक है, आई होप यहां तक पूरा समझ में आया होगा. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, spaces, it refers to the emotional void left by the loss, which are now healing with time. Metaphor which suggests the connection between great soul and you. ठीक है, now it's getting better and you are remembering the soul. Soothing electric vibration, it is soothing as you remember the person in a good positive way. Earlier क्या हो रहा था, आप ग्रीफ में रिमेंबर कर रहे थे, आप कंफ्यूजन में रिमेंबर कर रहे थे, यू आर रिमेंबरिंग द मेमोरीज यू हैड एंड यू आर absolutely numb from inside, absolutely full of sorrow, the feeling of melancholy कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, confusion था. अब you are remembering, reminiscing the happy days you had with them, with the other person, and you are moving on in life, and the sense of loss and sadness subsides. और sadness जो है वो subside हो चुकी है. पहले sadness profound थी, अब वो subside हो रही है. ठीक है, despite the grief, Angelo suggests that with time peace returns, filling the void left by the departed with a healing comforting energy. healing comforting energy से fill हो जाता है. ठीक है, अब last, our senses restored, never to be the same. Whisper to us, they existed. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ध्यान से सुनना. Restored, healing from the shock and deviation from normalcy and moving towards the normalcy. क्या हुआ था, अभी मैंने अभी पूरा आपको एक्सप्लेन किया था कि हम पूरी तरीके से हील हो चुके थे, हीलिंग हो रही थी हमारी, हम लोग पूरी तरीके से शॉक थे, हम लोग डेविएट कर गए थे नॉर्मलसी से, राइट, क्योंकि हम लोग रोज उनको देखना नॉर्मल था हमारे लिए, एंड देयर एब्सेंस हैड बिकम एबनॉर्मल फॉर अस. Right, we had deviated from the normalcy, and now slowly and steadily we are accepting the change, है ना, we are accepting the change in life. पे भी एक थीम है कि everything changes in life. ठीक है, we are accepting the change. We experience the world a little differently than we did before. It's a sort of new normal for us. ठीक है, रिफ्रेन यहां पे रिफ्रेन कर रही है, रिपीट कर रही है. क्या रिपीट कर रही है, दे एग्जिस्टेड. जब आप कोई दो वर्ड, दो लाइन ऐसे छोटे से रिपीट करते हो, उसे रिफ्रेन करना, रिपीट करना कहते हैं. द वे दे लिव देयर लाइफ एंड इन्फ्लुएंस अस, इट्स अ मैसेज टू लीड आवर लाइफ इन द सेम वे, फॉलोइंग देयर टीचिंग्स, आइडियल्स, to use their emotional and intellectual teachings which they have imparted to us and implement them. उसको अपनी रियल लाइफ में लेकर आओ, right, implement them in our life. This shows the potential for our growth. ये क्या दिखाता है, हमारे growth potential, कि हम लोग कितना grow कर सकते हैं, because that person has lived with and his teachings are still living within us. We need to be at our best following their teachings, and it would be a sort of tribute to them, and we owe it to them. It would be a tribute that, sir, we are your students and we look how far we have come just because of your teachings. Just Nani, just look how big your Kabir has become, right? To them, these lines again show the great effect that the person, great trees, had in our life, and again motivates us to move ahead in following their ideals. ठीक है? The final lines encourage us, हमें encourage करती हैं to live on and strive to become better individuals. हम अपना best version बने, right? जिस भी चीज के लिए हमको वो डांटते थे, हमको वो बोलते थे कि ये होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, हम वो चीजें लाएं अपने अंदर. We should bring all these things inside us, right? And prosper in life, honoring, and what will, when we will be doing these things, हम लोग क्या कर रहे होंगे? We would be honoring the memories and the legacy of the ones who have passed, and that would be living inside us, right? Goosebumps. We can be and be better, for they existed.
क्यों बेटर होंगे? क्योंकि वो एग्जिस्ट किया, उनके लिए वी हैव टू बी द बेस्ट वर्जन्स ऑफ आवरसेल्फ एंड वी हैव टू बी द बेस्ट, एंड दैट्स हाउ the poem ends on a very hopeful note कि हम लोग in spite of this new normal, being in this new normal, हम लोग ने नया normal बना लिया है, and in your presence won't, obviously it will never be the same without you, ठीक है, but we value you and you will be us, you will be with us. With your teachings will live with us, and we will prosper in life because of you. Right? Now, let's quickly get rid or get done with this poetic devices. Metaphor, the most striking device Anglo uses throughout the poem is the metaphor. By throughout the poem is पूरी poem ही एक metaphor है. The great trees represent the influential figures or great soul. Their falling stands for the depth of these significant individuals. For instance, when great trees fall, rocks on distant hills shudder. Metaphorically conveys the profound impact of their loss. ठीक है, profound का meaning अभी तक भी नहीं पता तो भाई it's great imagery. Angelo employs vivid imagery. Vivid is proper physical description, detailed description to wake the reader's senses. For example, lions hunker down. ऐसे hunker down हम लोग imagine कर पा रहे हैं, ठीक है, इन टॉल ग्रासेस को इमेजिन कर पा रहे हो. ज्योग्राफी क्लास 9 सवाना, ठीक है, एंड इवन एलिफेंट्स लंबर आफ्टर सेफ्टी पेंट्स अ विविड पिक्चर ऑफ द एनिमल वर्ल्ड्स रिएक्शन to the fall of a great tree. Personification, the poet gives human characteristics to non-human entities. Rocks on distant hills shudder. Shudder आप कब करते हो? शॉक आ जाता है, थंडर करते हो, शडर करते हो, ट्रेम्बल करते हो. दैट नॉन लिविंग पर्सन, दैट इज ऑब्वियसली नॉन लिविंग पर्सन तो नहीं कहेंगे, नॉन लिविंग क्वालिटी रॉक्स में है जो उसको दी गई है, इज एन इंस्टेंस वेयर इनएनिमेट का मतलब नॉन लिविंग ही होता है बच्चा, इट्स अ सिनोनिम फॉर नॉन लिविंग. रॉक्स आर पोर्ट्रेड एज रिएक्टिंग टू द फॉल ऑफ ग्रेट ट्रीज, embodying the shock and tremors experienced by society upon losing a significant figure. वो represent ये कर रही हैं. Simile, Angelo uses similes to draw comparisons while not as explicit as traditional similes. एकदम clear नहीं है. Phrases like reduced to unutterable ignorances of dark cold curves draw a comparison between ignorance, ठीक है, and after loss to being lost in dark cold waves. ठीक है जी. अब alliteration, this is the repetition of the same initial constants. Spaces filled with a kind of soothing electric vibrations. ठीक है. Repetition, Angelo repeats the phrases when great trees fall and when great souls die to emphasize the profound impact of such loss. The repetition of they existed underlines the affirmation of their influence, कि कितना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस था उनका हमारे ऊपर, राइट. कुछ तो दिक्कत है, राइट. सिनेक्डकी, नाउ दिस इज अ न्यू फिगर ऑफ स्पीच. इसके बारे में नहीं पता होगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. क्या है? दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा. हियर ग्रेट ट्रीज एंड ग्रेट सोल्स stand for the entirety of influential figures or significant individuals. Symbolism, Angelo uses various symbols to convey deeper meanings. Great trees क्या symbolize कर रहे हैं? Symbolize strong, influential people, while dark cold caves symbolize ignorance or despair. ठीक है. Assonance, this is the repetition of vowel sounds. कहां पे हो रही है? The reported W sound creates rhythmic effect. Chair eyes briefly see with a full clarity. Now, last but not the least, let's discuss the themes of the poem. ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड है, ठीक है. Maya Angelou's When Great Trees Fall explores क्या क्या थीम एक्सप्लोर करती है? फर्स्ट, द प्रोफाउंड डीप इम्पैक्ट ऑफ लॉस. सेकेंड पॉइंट क्या एक्सप्लोर करती है? मोर्निंग, how people mourn and how difficult the mourning period is for people. The enduring legacy of great souls, कि कितने जबरदस्त इन्फ्लुएंस थे वो हम लोगों के ऊपर. This poem is reflecting, ठीक है, renewal at the last, how our new life is,
how the life will is without them, how we have, made ourselves comfortable with the fact somehow that you are not here amongst us. Connection with the great souls, and you are still connected to them. And last but not the least, mortality. एक दिन सबको मरना ही है ना? तो that kind of theme is also being reflected through powerful natural imagery. The poem illustrates, मतलब shows how the passing of significant figure, whether personal or cultural, ठीक है, पर्सनल हो या कल्चरल फिगर्स हो, क्रिएट्स अ डीप वॉइड, लीविंग दोज लेफ्ट बिहाइंड इन सोरो, एंड ट्रांसफॉर्म्स, कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, इनटू रिमेम्बरेंस, याद करते हैं सब लोग, एंड इंस्पिरेशन. अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, इट कन्वेज अ मैसेज ऑफ रेजिलियंस. रेजिलियंस मतलब एबिलिटी टू विथस्टैंड, रिकवर और अडेप्ट टू चैलेंजेस, चेंजेस, इमोशनल टफनेस ये डेवलप करता है. मैसेज ऑफ रेजिलियंस एंड रिन्यूअल, दैट यू हैव टू बी रेजिलियंट, इमोशनली रेजिलियंट. डेवलप करने पड़ेगा आपको ये सारी चीजें. डिसओरिएंटेशन मतलब कंफ्यूजन, ठीक है. द पोएम ऑल्सो एक्नॉलेज, और क्या एक्नॉलेज करता है कि ये भी चीज है. द शो द स्लो इरेग्युलर, ठीक है, बहुत धीरे धीरे, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यू नहीं निकलता. पीरियड ऑफ टाइम टेक्स अ ह्यूज टाइम, एंड दैट्स व्हाई वो पीरियड ऑफ टाइम रेफर किया गया है. इरेगुलर वापस आ जाता है, ठीक है. प्रोसेस ऑफ हीलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस, शोइंग हाउ ग्रीफ urging us to honor those who have passed by striving to be better because of their existence. And we need to be best versions of ourselves. Why? Because we need to make the trees who have fallen proud. This was the explanation of the poem When Great Trees Fall by Kabir. I hope you liked it, right? And any confusions whatsoever, please drop your questions in the comment box. You will find the PDF in the free study material section of the Yash Maheshwari app. See you with the next poem. Tata, bye bye. Take care and read this once again. Watch the video again to get your concepts clear. ठीक है? Take care.